This conference will now be recorded. یا علی مدد سر. یا علی مدد، یا علی مدد. تمام ساتھیوں کو یا علی مدد. Thank you for joining us this morning. Inshallah, we will continue to read the Farman of Imam Zaman with some tasbiyat. We will begin. Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Rahman, Ya Rahim. نور مولانا شاہ کریم السنی حاضر امام، حاضر امام. توفیق، تاہید، ہمت و یاری مولا. توفیق، تاہید، ہمت و یاری مولا. یا مولا مہربان مدد فرما، یا مولا مہربان مدد فرما، یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، یا مولا مہربان مدد فرما، مدد فرما. یا مولا ہم غریبوں کی اپنے نور کے ساتھ مدد فرما مولا. یا مولا مہربان ہمارے قریب آ جا مولا. یا مولا ہم پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ مولا تاکہ ہم کچھ کام کر سکے مولا. یا مولا مہربان، یا مولا مہربان تیری مدد کی اشد ضرورت ہے مولا. یا مولا مہربان مدد فرما، مدد فرما. الحی القیوم، الحی القیوم، الحی القیوم، علی اللہ مدد فرما. الحی القیوم، علی اللہ مدد فرما. تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد. امام کے مبارک نام پر نور مولانا شاہ کریم السینی حاضر امام. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. فرمان مبارک، ڈھاکہ، ایسٹرن پاکستان، دسمبر 5، 1964. آج جو ہم بیت الخیال کا فرمان پڑھنے جا رہے ہیں اس کا پہلا حصہ جو ہے اس کے اندر مولا ہمیں ہمیشہ کی طرح اس بات کا دھیان دلاتے ہیں کہ مولا دیکھتے ہیں اور مولا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کتنے مشغول ہیں یا مشغول ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جو ہماری روح کے لیے ہماری زندگی کا مقصد تھا،
हम उसको ना भूल जाएं. At the beginning of the Farman, as always, Imam is reminding us, drawing our attention, and Imam says that I understand that we are all busy with our lives. But then he reminds us again that do not forget what is essential, what was the purpose of our life, and what is temporary and what is permanent. Is drawing our attention toward our soul and the purpose of the life at the beginning. So let's read this Farman. I do not want that my spiritual children should forget that at all time they should have their faith in their hearts and in their soul. अब भूल ना जाएं अपने मजहब को, अपने अकीदे को, अपने ईमान को, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, आप उसको हर हमेशा याद रखना. In other words, do not forget your faith as you are busy in your physical, material life. All of your lives are occupied and you have less and less time to devote to the essentials of life. As you can see, that Imam understand that we are busy and we do not have too much time. But that does not mean that what is important, essential in our life, and that is what? Our soul, our purpose of life. And we should not forget that. मौला फरमाते हैं कि तुम्हारे पास कम से कम वक्त होगा इस दुनिया के अंदर, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मजहब के बातीन को, कि जो उसका एक खास हिस्सा है, जो उसका असूल है, असूल दीन है, उसको हम भूल जाएं. फिर मौला फरमाते हैं, and what I would like my spiritual children to understand is that our practice is a practice of hearts and the soul. I remember someone asking me last week regarding this two broken down words, the practice of hearts and soul. Mullah says, do not forget that our practice of Islam is the practice of hearts and soul. हमारा जो मजहब है, हमारा जो तरीका है, वो हर हमेशा हमें अपने दिल से, अपनी सोल के साथ. अब ऐसा लग रहा है साउंड कि दिल, पता नहीं कौन सा दिल है, क्योंकि पहले हमने ये दिल समझा था, फिर हमने ये दिल समझा था, और फिर सोल के साथ. How do we comprehend and understand?
We do not have to go too far to understand that. हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है इसको समझने के लिए. हमने अपनी जिंदगी में अपनी मदर से बहुत मर्तबा सुना है, बेटा दिल लगाकर काम करो. We have heard from our mother, put your heart and soul into your works, son. That's what our mother would say. That is exactly what Imam is saying. Pay attention and use your emotion, your thoughts, your hearts, your soul, and do not forget, meaning completely focus. क्या मतलब कि भूल ना जाए पूरी तवज्जो से अपने मजहब की तरफ ध्यान दें. देखा आपने, इतना मुश्किल नहीं था. And we do not need to make it harder. But it is also a practice of reason. लेकिन उसके साथ साथ reasoning भी जरूरी है. I love this part. With that, Imam says, remember, reasoning is also important. इसके साथ साथ लॉजिक को भी यूज करें. ऐसा नहीं है कि 24 घंटे जमात खाने में जाके बैठ जाना है. ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे जंगल में जाकर तस्वीर निकालनी है. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप काम काज छोड़कर और अल्लाह 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 करने बैठ जाएं. रीजनिंग एंड लॉजिक must be part of your thought process when it comes to remembrance, when it comes to your faith and following of your faith. What is reasoning? You give the time that you need to earn for you and your family. But during that time, keep the name, keep the remembrance, keep the ethics, the moral of your tariqah, the farman of the imam in your heart. जब मौला ने फरमाया कि आप हर हमेशा उसको याद करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जमात खाने में जाके बैठ जाएंगे 24 घंटे. इसका मतलब ये भी नहीं है कि माला गले में डालकर जंगल में जाकर साधु बन जाएंगे. इसका मतलब ये नहीं है. मौला फरमाते हैं कि उसके साथ लॉजिक भी यूज करें, रीजनिंग का हाथ ना छोड़ें. यानी कि आप जो वक्त भी दरकार है दुनिया के काम करने के लिए वो करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी तस्बीह को, मौला के नाम को, इसमें आजम को ना भूलें. और ना भूलें कि आपका मजहब आपको क्या इजाजत देता है और किस चीज की ताकीद करता है. यानी कि एथिक्स और मोरल नीड्स टू बी देयर. यानी कि जो हमारे मजहब के कायदे हैं, ईमानदारी के, असूल के, उसका दामन ना छोड़े. क्योंकि विदाउट द एथिक्स ऑफ इस्लाम हमारा धंधा अच्छा नहीं होगा. पैसे जरूर बना लेंगे लेकिन अच्छा नहीं होगा हमारी रूह के लिए, हमारी आखिरत के लिए. धंधा करने का कोई मना नहीं करता है, लेकिन उसी वक्त इमाम की याद को दिल में रखें. And that is the practice of reasoning, the practice of logic. No one is asking you not to work, but keep the remembrance with you. All right. Both this you have to understand.
और ये दोनों बातें तुमको याद रखनी है कि एक तरफ दुनिया है और वो भी करना है, एक तरफ दीन है उसको भी करना है. You must remember both. On one hand, you have to earn and work. On the other hand, you have your tariqa and your soul and your akhirat. Remember both and understand both. And you have to be able to convey to the members of the Jamaat. Another amazing, beautiful part, because sometimes we do get, some of us, we get that questioning, why do we need to do this, what we are doing? Look at this part. And you have to be able to convey to the members of the Jamaat. और ये हमें वक्तन फॉर वक्तन जमात को याद दिलाना होता है. And this is my humble opinion. It is our duty commanded by the Imam Zaman. The duty of the Mukhi Kamriya, the duty of the Wazin, duty of the Tariqa board, duty of the elders of the Jamaat, duties of the scholars in the Jamaat, to make sure that we talk about this. How are you going to remind? You're not going to hold somebody in Jamaat and say, hey, mere bhai, hey, meri behan, don't forget this. No, you have to get involved in a conversation. You have to constantly talk about it. It is a duty, a farman, a amr from the Imam Zaman to each one of us. We cannot leave this to Tariqa board only. This is for each one of us to stay engaged in the conversation. I'm not asking anyone to force anything on the Jamaat. Remember, the free will remains with each one of us. Just casual, daily conversation. Don't shy away from the good things. Don't try to fit in, because when you try to fit in, then you are doing what majority is doing, and you are just trying to look good in their eyes, not in Imam's eyes. So stay engaged, stay in the conversation, and you have to be able to convey to the members of the Jamaat. Remember that part. This is very hard to do. See, Imam understand, because as soon as you start talking about something like that, they run away from you. They call you fanatic. They call you Bhagat. They call you names. But remember, that is the Imam's Farman. Casually, do not force anyone. Just stay engaged in the conversation. Okay. And Mola said this is very hard to do. It is difficult work. See, Imam understand it's going to be difficult. And this is why I attach the very greatest importance to the work. इसीलिए मौला फरमाते हैं कि मैंने इसके ऊपर बहुत जोर दिया है. And we can see, especially last 25-30 years of Mullah's Farman, again and again and again and again, Imam have drawn Jamaat's attention that stay focused, remember the purpose of your life, and remember what is important and what will come with you at the end.
स्पेशली मौला ने पिछले 25-30 सालों के अंदर इस बात पर बहुत जोर दिया है। इन मौला फरमाते हैं कि स्पेशली ये काम जो बैतुल ख्याल के अंदर आते हैं, माई स्पिरिचुअल चिल्ड्रन आर डूइंग हियर। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, चूंकि ये बैतुल ख्याल का फरमान है, I attach a very greatest importance to the work my spiritual children are doing here। जो काम आपने अभी इस जिम्मेदारी ली है बैतुल ख्याल के अंदर, आप उसको भूल नहीं जाना। बोला, now the second part of this, another importance of the zahiri and batini ibadat। Look how Mola is drawing our attention toward the physical zahiri shariat in our tariqah and the isme azam ibadat and the hidden batini part of our tariqah। Let's see what Mola says about that। क्योंकि Mola अब इस पैराग्राफ में हमारी तवज्जो और कंपैरिजन हमारी जाहिरी इबादत और हमारी बातिनी इबादत के दरमियान दिखाते हैं कि जिसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है वो हमारी जाहिरी शरीयत है, और जो चीज हम भूल रहे हैं और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमारी बातिनी इबादत है। उसकी तरफ मौला तवज्जो दे रहे हैं इस पैराग्राफ में। अब मौला says, I would like you also to have it clear in your minds what is essential in our practice। It is not only dua, it is not only presence in Jamaat Khana। I would like you to pay attention to this, because I do not want anyone to come back and argue. This is not a point of argument, but a point to reflect and think। Mullah says, I would like you to also to have it clear in your minds what is essential in our practice। मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूं, मौला फरमाते हैं कि जो हमारे दीन के, हमारी प्रैक्टिस में, हमारे तरीके में असल है, कोर है, हमारे मजहब का पाया है, और वो खाली दुआ नहीं है और खाली जमात करने आ जाना नहीं है, यानी कि जाहिर नहीं है, शरीयत भी नहीं है। Yes, dua is farz and important, dua is farz and important, but that is not the point, that is not the batin of our tariqah। Because if you look around yourself, and it is very important for us to pay attention to our environment and reflect, 99%, how many? 99% is what? They pay so much attention to and are focused on Shariat Zahir, 3-time dua, and then when you look in the morning, you will hardly find 1%. So what are they saying? Essential of our tariqah is dua, when the essential of our tariqah is what? Ibadat।
जब आप अपने करीब करीब देखते हैं तो आप देखते हैं कि 99% जमात दुआ पर इतना जोर देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमारे मजहब का असल क्या था। हमारे मजहब का असल जो था वो इबादत थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुआ नहीं पढ़ेंगे और जमात करने नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन पूरी तवज्जो उसके ऊपर देना। और आप जाकर देखें जमात खानों में शाम को 1000 लोग हो गए, सुबह को 10 लोग हो गए। कितने? 99% in evening, 1% in the morning. Why? Because we have forgotten what is important in our tariqah. So Mola is reminding us here, it is not only dua, it is not only the presence in Jamaat Khana, it is not only service to the Imam and to the Jamaat. Another very great point someone was asking other day, what about my khidmat in Jamaat? Yes, it is important, but that is not the only thing which is important. Do not make that excuse that because I'm doing khidmat, I'm going to miss my ibadat. That is only excuse in your mind. That's it. Mullah's Farman is very clear. He wants to guide you and he is going to give you the Farman, and he's telling you what is important. It is not only the service, the khidmat to the Imam and Jamaat, but, so what is important in our tariqah? So now let's look and see what is important in our tariqah. Mullah says that is also ibadat. वो इबादत है। अब दुआ के साथ साथ, जमात खाने की हाजिरी के साथ साथ और खिदमत के साथ साथ इबादत को नहीं भूलना, क्योंकि वरना आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे। Along with your 3 times dua, along with your presence in the Jamaat Khana, Hazri, and along with your khidmat to the Imam and the Jamaat, there is a ibadat. It has to be balanced. It cannot be 99% and 1%. That is not a balance. Remember, ibadat is what keeps us strong in our tariqah. It keeps our faith, iman, strong. What did Maula Baba says in previous Farman? Those in Islam who forgot the ibadat, they were ruined. याद रखें मौला ने पिछले फरमान में क्या फरमाया कि इस्लाम के अंदर वो लोग कि जो इबादत को भूल गए वो तबाह हो गए। अगर हम इबादत को भूल जाएंगे तो हमारा हाल क्या होने वाला है? इबादत वो तो हमारे मजहब का कोर है, असल है, बातिन है। Inshallah, we will pay attention to this. There are spiritual children who do not understand the meaning of the ibadat, who do not appreciate. And Imam is looking at the Jamaat कि हमारी जमात के अंदर 99% लोग जो है वो इबादत की वैल्यू, इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। There are
Imam is looking at the Jamaat when Imam says this, that there are spiritual children who do not understand the meaning of the ibadat, who do not appreciate what we have in our tariqah. Our tariqah have a Imam Zaman, and through Imam Zaman we have Isme Azam, and we have the ibadat, and we must appreciate that. हमें उसकी कदर करनी होगी. अगर हमने नहीं किया तो हमारा हाल भी वही होगा जो दूसरों का हुआ जिन्होंने इबादत को छोड़ दी थी. We will fall into the same trap as others who had left and did not understand and did not appreciate the ibadat. What is important, Mullah says? What is important? Important is that my spiritual children should understand that they have two things which are important during their lifetime. The first is your worldly life. The second is your spiritual life. Neither of those must be just all alone. देखिए मौला क्या फरमाते हैं, बैलेंस. याद रखें कि दो चीजें जरूरी है हमारी जिंदगी में, दीन और दुनिया, दोनों जरूरी है, और हम एक के लिए दूसरे को नहीं छोड़ सकते हैं. Like Nachi's earlier in the above paragraph explained, that it does not mean that you're going to take the tasbih and sit in Jamaat for 24 hours. That is not right either. You cannot run into the jungle and sit there and take your tasbih. That is not correct either. But it doesn't mean that you're going to focus 100% on your worldly matter, because that is not correct either. Or you're going to put 99% emphasis on the worldly matter and 1% on the dini matter. Then that is not balance. What is the balance? And Mullah is explaining, like a father and mother to us. And what is that? You have your word and your work. But remember, you have your mazhab, your faith, and your dua, your presence, your ibadat. You cannot have one or the other, but both. I do not want you to live in only a worldly manner. And nor should you devote your life entirely to the spiritual matter. And we have already talked about that. It has to be balanced, not 100% here and not 100% there. A fine balance. Do your work when your work is required. Do your ibadat and do not forget when your ibadat is required. And look, Imam has given us 8 hours for work, 8 hours to sleep, and is only asking you to give 3 hours. I don't think that's too much to ask. 3 hours out of your 24 hours. Again, self-reflection. अपने आप से सवाल पूछे. I'm not asking you. I cannot judge you. No one can ask you. No one can judge you. Ask yourself, have I given 3 hours focus, completely 3 hours to my imam, to my tariqah, to my belief, to my practice? Have I given 3 hours? If your answer is 1, Mubarak. If your answer is no, then pay attention to this Farman. If this means abandoning your social
responsibility to your families, your children, etc. If this means abandoning abandoning your social responsibility to your families, your children, meaning it does not mean कि आप सारा दिन तस्वीर लेके बैठ जाएं और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी जिम्मेदारी को भुला दें, because this was a continuation from here. This is a part continuation. कि ऐसा नहीं है कि आप दुनिया दुनिया करें और ऐसा भी नहीं है कि दिन दिन करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाएं, अबेंडन कर दें अपनी फैमिली को और अपनी जिम्मेदारी को. इमाम इज नॉट आस्किंग यू टू डू दैट. आपको जोगी बन जाने के लिए नहीं कह रहा है मौला, आपको भगत बन जाने के लिए भी नहीं कह रहा है मौला, आपको एक अच्छा मोमिन बनने के लिए ताकीद कर रहा है. He is asking you to balance, not that you become a bhagat and just sit in ibadat and in Jamaat Khana 24 hours. He is not asking you to do that. This is why, once again, I urge my spiritual children to follow very carefully what you are being taught by my spiritual children working in the association, and to understand that is not only the external signs of one's faith that are important, but also ibadat. मौला फरमाते हैं कि my spiritual children, जो आपको अपनी मजहब की अंदर सिखाया जाता है, जो आपके मजहब के अंदर आपको सिखाया जाता है, उसको आप समझें. और ऐसा नहीं है कि जो फिजिकल है, एक्सटर्नल है, जाहिर है, उसको इम्पोर्टेंट देनी है, बल्कि इबादत को भी इम्पोर्टेंस देनी है. क्योंकि हर चीज जमात खाने में इबादत के ऊपर फोकस नहीं करती है. और जब आपको सिखाया जाता है मोरल के बारे में, एथिक्स के बारे में, मजहब के बारे में, तरीके के बारे में, फरमान के बारे में, गिनान के बारे में, तो वो उसको जाहिरी पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाते हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसके बातीन को भी सीखें, समझें और उसकी प्रैक्टिस करें. So when they teach you whatever they teach you in the Jamaat, of course they will teach you from the Zahiri point of view. It is up to you to understand the batin of that and keep balance between Zahir and the batin. So here we must understand there is a physical world, the material world, and your Zahir. So first balance comes from the material world and the spiritual world. Second balance comes in the physical practice of the ibadat, the shariat of the ibadat, and the batin of the ibadat. There is again a zahir and a batin. एक तो दीन और दुनिया है, वहां पर भी बैलेंस करना है. फिर मजहब के अंदर भी एक हमारा जाहिर है, हमारी शरीयत है, और एक हमारा बातीन है, हमारी इबादत है. उस पर भी फोकस करना है और तवज्जो देनी है. What you have in your hearts, what you have in your soul. I give you one other example. There is another hadith which may or not be correct, that during the lifetime of Prophet
Many Muslims were occupied either in wars or in service or in activity for the organization either in Medina or in Mecca, and they could not always observe all the religious duties which were incumbent upon Muslim at the time. And the Prophet says, this is not what is important. What is important is that if you cannot observe now, you observe later. If you cannot say your prayers at the right time, you must say them even if it is at the wrong time. What is important is that you should carry your faith in your heart and in your soul. This is the meaning of ibadat. Here, Imam has given an example, and Imam has given this example in many other words in other Farman too. If for whatever reason, if you cannot attend Jamaat Khana, I'm not talking about the excuse, but if you have a valid reason, and if you cannot perform your dua at the correct time, first we're going to talk about that, then we will come to the ibadat. Then it does not mean that you should not remember and perform your ibadat, your dua. If you cannot, but you make sure as soon as it is possible, perform your ibadat, say your dua. And this is not a new farman for any of us. If for whatever reason, for example, you are going to school in the evening, you are at work in the evening, you are trying to get to the Jamaat Khana but you are running late, say your dua when it is possible. I'm sure somebody is thinking about, and what about ibadat? So I would like to say two things here. One, Imam himself has given the guidance when a group of nurses asked Mola Bapa, Hazir, present Imam of the time, Ya Mola Bapa, we are all nurses and we all have Isme Azam and we all love to perform ibadat, but after taking the nursing profession, sometime we have to work overnight. How do we perform ibadat now? And Mola Baba said that remember the 4 o'clock in the morning is the best time to perform the ibadat. But having said that, if you have a job, a duty to perform at that time, it does not mean that ibadat is forgiven. You must perform ibadat as soon and whenever it is possible. No excuse that I was sleeping. Sleeping is not an excuse. I was tired, not an excuse. But just like for the dua, if you are working and you cannot go to Jamaat Khana and you cannot perform your dua, then as soon as possible, perform your dua. Do not take this as an excuse. Warning, do not take this as an excuse. Sleeping, tired is not an excuse. So Mola Bapa had given guidance to those who work at night. And not every day, because nurse, they're all asking this question, had said, sometime we have to perform duty at the middle of the night.
What should we do during those nights where we have to give our time duty to the nursing profession or any profession if you are working at night? Then those nights, Imam have given you permission to perform your ibadat as soon as possible, whenever. And you can create an environment in a room privately, hopefully in dark, with your niyat, inshallah, Imam will accept their prayer, their niyat of your. And if my spiritual children in the Ismailiya association understand this, and they are able to convey this to the members of the Jamaat, you will be doing the very highest service, the very highest service. And I would like my spiritual children to convey this and to carry this in your hearts and in your soul. Now here, Imam put a heavy responsibility on the Tariqa board and on you. And you know what is that? I know sometimes when it's not convenient, we don't like to read those Farman, which are not convenient to us. And that is this part. That Mullah says, if my Tariqa board understand this, the word is if. If you, like I said, most people don't like to read what is not convenient to them. Mullah says, if you understand this, then you will be able to convey. If you don't understand this, how are you going to convey? If my Tariqa board understand this, then they should be able to convey this to the Jamaat. And then also, this responsibility is put on you. And again, I know it's hard because when it's not convenient, we like to ignore the Farman. And this responsibility is on you too, on the spiritual children. All of us, whoever have taken the ball, if we understand this part, then it is responsibility on our shoulder to convey this to the others. हमारी आदत है कि जब कोई फरमान हमारी फेवर में नहीं होता है, हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं. लेकिन I don't think that's a good idea. मेरे ख्याल में ये अच्छी आदत नहीं है कि जो हमारे लिए अच्छा है उसको पकड़ ले, जो अच्छा नहीं है उसको छोड़ दे. तो मुल्ला ने यहाँ पर एक की वर्ड फरमाया है कि पहले अगर आप समझ गए हैं, एक तरीका बोर्ड को रिस्पांसिबिलिटी थी और एक हमको रिस्पांसिबिलिटी थी. And what is the responsibility on our shoulder? That if you understand this, then you should be able to convey this to the Jamaat. तरीका बोर्ड को भी कहा और हमको भी कहा, हम दोनों पर ही रिस्पांसिबिलिटी है. खाली उनकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है और खाली आपकी भी नहीं है, कंबाइनली दोनों की है. And I know sometimes it is not convenient for us. और यहाँ पर मैजिक वर्ड था if, because if we don't understand, how we will convey. All right, so we inshallah will continue this Farman next week. From here, I will mark this Farman here. Inshallah, we will continue from here. Let me stop here as we still have 3-4 more paragraphs to go. It's a beautiful Farman, inshallah. There are a lot of points, the hints, and the teaching in this Farman. I believe this is one of the longest Farman of the Baitul Khiyal which Imam has given. Most of the Farman of Baitul Khiyal are not this long. But here, Imam has given us
point by point by point. आपने देखा कि मोस्टली बैतुल खाल फरमान इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर मौला ने एक लंबा फरमान नुक्ता ब नुक्ता समझाया है, एक एक पॉइंट को समझाया है मौला ने. इंशाल्लाह we will continue with this next week. जी, if you have any comments, any question, anything that you would like me to translate into Urdu or Gujarati, let me know. Subhanallah, sir, Subhanallah. Friends, please share your questions in the chat. So we don't have any questions in the chat at this time. Friends, please unmute your device if you have any questions. Any comments, any question, anything that you did not understand, please ask again. All right. Looks like याली no one मदद has any. जी, याली मदद. शुरुआत में आप जो दुआ देते हो तौफीक ताहिद, तो इसका मतलब क्या होता है? तौफीक ताहिद हिम्मत यारी, इसकी जी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ, उसका मतलब मैं समझा नहीं. तौफीक ताहिद, ओके. तौफीक कहते हैं हमको हिम्मत दे, स्ट्रेंथ इंग्लिश में बोलते हैं ना. ताहिद का मतलब है कि हमको इंस्पायर कर, हमें बुद्धि दे, गुजराती में बुद्धि समझ. तो पहले तौफीक यानी कि ताकत, ताहिद यानी कि बुद्धि समझ, हिम्मत वो यारी. हिम्मत का मतलब होता है करेज, और यारी तेरी दोस्ती इनायत कर. जी, ये बहुत ही जरूरी है कि कोई भी काम करने से पहले इमाम से मदद मांगी जाए. ये हमारे दाइयों और पीरों का सेवा था, प्रैक्टिस थी कि वो कोई भी काम करने से पहले मौला से तौफीक और ताहीद, हिम्मत व यारी, मदद की दरखास्त करते थे. कोई भी काम उसकी मदद के बगैर ना करें. हमने बहुत ही अपनी आदत बना ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम शुरू कर देते हैं काम. वो अच्छा तो है लेकिन उसके अंदर दिल नहीं होता है हमारा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करने के बाद एक छोटी सी 1 सेकंड की जरूर दुआ करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मौला तो हमारी मदद फरमा. ये आदत बनानी चाहिए हमको. जी, याली मदद से याली मदद. सर, जैसे आप बोले ना सर कि और स्पेशली है ना सर, हम बच्चों को है ना बचपन से ऐसा स्ट्रिक्ट करते थे कि दुआ टाइम पे ही पढ़ना और जमात खाने जाना ही है. अगर नहीं जाते हैं तो ऐसा लगता था कि बहुत गलत काम कर रहे. लेकिन क्योंकि खुद इबादत पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए, नहीं करते थे, तो उनको भी कभी नहीं बोले सर. और अभी वो लोग एडल्ट हो गए हैं. अब उनको मतलब हमको भी चलना है, सही रास्ते पर लाना है, तो हम कैसा शुरुआत करें? थोड़ा थोड़ा जमात खाना सनाशी में से सिखाती हूँ, लेकिन इबादत के लिए उनको कैसा रीजनिंग के साथ उनको ये फील करवाना कि कितना इम्पोर्टेंट है, तो फरमान से लेना या कैसा, थोड़ा सिखाइए. जी, तो I will come into the English in a minute for my English speaking friends. तो यहाँ पर देखें कि आपने आपकी आजीजी के साथ फरमाया कि हमसे एक गलती हुई है. ये हमारी शुरुआत है.
जब जो अपनी गलती को नहीं मानता है वो कभी भी दुरुस्त नहीं कर सकता है। उसको गलती को मानना जरूरी है। पहले हमने हमेशा अपने बच्चों को जाहिर सिखाया, बातिन नहीं सिखाया। जाहिर की प्रैक्टिस करवाई, बातिन की प्रैक्टिस नहीं करवाई। इमाम ने अपने पिछले जामे में एक फरमान फरमाया है कि अगर आप अपने बच्चे को हमारे मजहब का जाहिर सिखाएंगे तो उनके दिल में जाहिर बैठ जाएगा और वो हमारे मजहब से दूर हो जाएंगे। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। इमाम ने 100 साल पहले ये फरमान फरमाया है। ओके, अब आए मसले की तरफ कि मसला क्या है कि अब तो ये मिस्टेक हो गई, अब क्या करें। तो जस्ट लाइक एनीथिंग कि पहले आप बच्चों को कहेंगे देखो जब तुम छोटे थे तो हमने छोटी छोटी प्रैक्टिस तुमको सिखाई थी और वो थी मजहब की जाहिर। उसको मिसाल दें कि जब तुम छोटे थे तो खाली दूध पीते थे, जब छोटे थे तो खाली बेबी फूड खाते थे, छोटे थे तो खाली खिचड़ी खाते थे। अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम दूध के साथ शरबत भी पी सकते हो, तुम बड़े हो गए हो तो खाना तीखा भी खा सकते हो। इसी तरह से जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं मजहब के अंदर भी हमारी फराइज तब्दील होती जाती है। तो अब आपको जाहिर की दुआ के साथ साथ इबादत भी करनी चाहिए। उसको शुरू करें 5 मिनट से कि हम 5 मिनट दिन में इबादत करेंगे और 5 मिनट रात में इबादत करेंगे। 5 मिनट खाली, क्योंकि उसके ऊपर आप 1 घंटा डालेंगे तो वो भाग जाएंगे। 5 मिनट हम दिन में प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि शाम को दुआ पढ़ने से पहले या शाम को दुआ पढ़ने के बाद या सोने से पहले 5 मिनट हम इबादत करेंगे। हमारे यहाँ एक फैमिली है जिनके घर पे नाचीज वीकेंड में कभी कभार जाता है। उनकी 3 बच्चियां हैं। मैं देखता हूँ कि उनकी ये प्रैक्टिस है, रेगुलर प्रैक्टिस है उनकी, कि वो उसकी माँ तीनों बच्चों को बिठाकर दिन में 1-2 मरतबा, कभी 3 मरतबा दिन में 5-5 मिनट उनको बोलती है आंखें बंद करके मौला को याद करो, बस 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। और फिर वीकेंड में 2-3 रात, फ्राइडे सैटरडे संडे उनको जमात करने ले जाती है सुबह को। फिर स्कूल की छुट्टियां होती है तो 7 दिन जमात करने ले जाती है। एक मेरे को बहुत पुराना फरमान याद आता है और मेरे बुजुर्ग मुझे कहते थे आप अपने बच्चों को जमात करने ले जाए, भले वो वहां जाके सो जावे, कोई बात नहीं है। Bring your children to morning जमात खाना even if they go there and sleep, वो फरमाते थे। उससे बच्चों की प्रैक्टिस होगी। जिस तरह से आपको शाम को ले जाते हैं ना, सुबह को भी ले जाए। प्रैक्टिस, रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। तो ये तरीका होगा आपका। So my sister had asked a great question, and the question was that first of all I have to say her humility, her humbleness. She said, I have made a mistake. I have put the zahir, the physical, and the shariat into my children's mind and heart. I never emphasized, never taught or taught them the importance of ibadat. Now my children are growing up. How do I teach them? And my reply to her was simple. And we started with the Farman of Sultan Muhammad Shah. If you teach your children the Zahir of the Tariqah, then the Zahir will sit in their heart and eventually one day they will leave your Tariqah. This is 100-year-old Farman. Teach them the batin of your Tariqah. So what do you do now? So I was guiding her in just my humble opinion.
practice, practice, practice. And that is always the key to anything you do. You tell them first logically, as you were children, you were only drinking milk and eating soft baby food. But as you can see, as you grow up, you don't only drink milk, but you eat solid food. Just like that in Tariqa, you were told to recite 3 times dua. But as you grow up, there is another part of our Tariqa which is more important than the physical dua, and that is ibadat. And practice with them. Tell them to sit, take 5 minutes out of their day in their daily life, 5 minutes during the day, and sit and remember Imam. 5 minutes here, 5 minutes there. Before the dua, after the dua, before they go to sleep, or when they wake up. Start with the 5 minutes. Then get up for the bandagi, start with 5 minutes again. I'm talking about the children now. Start with 5 minutes. Don't pressure them for 1 hour. And then I was telling, if your children are young, take them to morning Jamaat Khana, even if they sleep in Jamaat Khana. Even if they sleep in Jamaat Khana, take them to Jamaat Khana. That is important, that you take them to Jamaat Khana. Because that is the practice which eventually they will remember and they will practice themselves, inshallah. If they're not doing it today, tomorrow they will come around to it and they will practice. Don't worry. Have a niyat, practice, 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 inshallah. Ji. थैंक यू सर। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जब मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ ना तो एकदम से माइक बंद हो जाता है, तो मुझे दूसरा कुछ पूछने का तो मैं पूछ नहीं सकता हूँ, तो प्लीज उसके लिए जरा मुझे फेवर कीजिए। एक एक करके क्वेश्चन पूछे जी। नहीं, बाद में मेरे को पूछने का, फिर मैं अभी अर्शिया को रिक्वेस्ट की ना, तो उसने अभी चालू किया मेरा माइक, कि मेरा माइक बंद हो गया, प्लीज चालू करो। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि दुनिया में इतने बिजनेस के अंदर डूब जाते हैं कि उसको जरा भी अपने मीन्स के जमात खाने आने का, कि दुआ पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मुझे बहुत फील होता है कि ऐसे लोग को किस तरह से समझाने का। देखें, कोई भी चीज है, आप ना तो मिशनरी है, ना आप तरीका बोर्ड है, ना आप मुखी है, राइट? लेकिन कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है। शायद आप ये पूछ रहे हैं, समझाने की जरूरत नहीं है, कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है। समझे आप? समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन यू गो टू एडवाइस दे विल नॉट लिसन टू यू, but you can bring that into the conversation. What is important and what is essential in our tariqa? Essential क्या है? Dua, bandagi, ibadat, soul. That is the conversation, not advice. That's how you start. Otherwise, they will not listen to you. Ji. Thank you so much. Ji. Any other comments? Anything to do with this Farman? Ji. हेलो सर, याली मदद। याली मदद। हाँ, अभी आपने समझाया वो जो મતલબ की માત્ર જાહેરી ક્રિયાઓમાં રીત રસમો પાળવી એ પૂરતું નથી, પણ एक बगीचा कराची जमात खाने का एक फरमान है 1964 का, जो भी आप पढ़ रहे थे उसमें, तो मौला ने फरमाया है, उसके अंदर एम फरमावी मौलाए कि તેમાં મઝહબની માત્ર જાહેરી ક્રિયાઓ અને રીત રસમો પાળવી એ પૂરતું નથી, પરંતુ ઇન્સાને પોતાની રૂહાની ઉચ્ચતા થકી પોતાના દિલમાં ઇમામતના નૂરને પ્રાપ્ત કરવું
અને તે વડે ઉચ્ચતર નૂરને પહોંચવું જોઈએ અને ત્યાં પહોંચવાની ઉમેદ રાખવી એ દરેક રૂહાની બાળકની ફરજ છે. તો આમાં એક આ રૂહાની ઉચ્ચતા થકી પોતાના દિલમાં ઇમામતના નૂરને પ્રાપ્ત કરવું અને તે વડે जो उच्चतर नूर की हाजिर में हमने बात की है और एक दिल में इमामतना नूर ने प्राप्त करવું ये दोनों में फर्क है कि एक ही बाबत है, क्या बोलना है, समझाएंगे प्लीज? जी जी सो आई थिंक इसी फरमान में नीचे ये बात आ रही है, लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीक भी करेंगे, आज भी हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले मौला फरमाते हैं कि हम जो जाहिर चीज करते हैं, यानी कि हमारी दुआ है, हमारे जमात आने की हाजिरी है, हमारी जमात आने की खिदमत वगैरह वगैरह है, वो हमारी फर्ज है और प्रैक्टिस है, उससे आपके दिल में कोई नूर उजागर नहीं होने वाला है। तो मौला फरमाते हैं कि पहले आप अपने दिल में इस चीज की नियत करें और विचार करें कि हमारे दिल में क्या करें कि एक नूर की रोशनी आए, और वो क्या है? वो है इबादत। कि इबादत के जरिए से ही किसी के अंदर नूर आ सकता है या नूर की रोशनी हो सकती है। फिर यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है नूर ऑफ इमाम, इमामत का नूर, तो आप जानते हैं कि वो लोग जो इमाम को अली अल्लाह कहते हैं या जो नूर अल्लाह कहते हैं, यानी कि इमाम नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी, तो मौला फरमाते हैं कि आप उस नूर की इच्छा करें, अब उसकी ख्वाहिश करें, उसको पाने की कोशिश करें, क्योंकि यही नूर, और जब नूर इमामत फरमाया तो मौला तमाम इमामत की बात करें, मौला अली से लेकर आगे क्यामत तक कायम तक की बात कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि खाली शाह करीम का नूर, शाह सुल्तान का नूर, शाह अली का नूर, ऐसा नहीं। ये वो एक नूर है जो नूर इमामत है, और वो नूर आप में भी आ सकता है। इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है हमारी, लेकिन ये लेसन बहुत आगे का लेसन है, यानी कि इमाम शनासी का लेसन है। इमाम शनासी का लेसन दूसरा है, ये लेसन नहीं है जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये तो छोटी छोटी क्लासेस है। ये जो आपने सवाल पूछा है वो बहुत ऊपर का है, आला है, आगे का सवाल है ये। जी Yali Madad, Yali Madad, Yali Madad. I have a question. What are the words that are used in the Ginan for spiritual happiness or Noor? Like, how do the Ginans express that idea? Like, I think there is a word Didar in the Ginans, but are there other words that are used in the Ginans to convey this experience? I'm sure there are many. I do not claim to be expert in Ginan, but there is not one word, but many words are expressed in Ginan. For example, would be prem, chahat, kurbat, all of this yari, all of these words are for the love of the nur of the Imam. And there are many, not one. I would say a couple of dozen different words are used in the Ginan for the same one single word of the love of the Nur. Would Brahma Prakash be one of them? Well, the drums may be different because that now you're talking about a drum. I'm not talking about the drums and tromologies. I'm talking about the particular words. Particular word, like I said, prem, chahat, kurbat.
didar, nur, icha. There are so many. And like I said, I do not claim to be expert in Gnan, but if you would make a catalog out of those words, you will be surprised how many different words Imam has used for the love of the Nur, or our peers has used for the love of Nur. And remember also, depending on what background they had, if they were the peers from the Iran with a Persian background, and if they were teaching to Punjabis, then they would have used a different background, like Pir Shams, I'm talking about. If they were like Pir Sadruddin, and they were teaching to the Hindus or the Sanskrit speaking Jamaat, then they would have used a different word. Gujarati speaking Jamaat. What about Sindhi speaking Jamaat? So you see, we have a vast background of Dawat of the peers, depending on where they were. And they were so good, even though they came from Iran, Iraq, Syria, and Middle East, they came to subcontinent India, where there were over 100 languages were spoken. And about 12 different languages they had used in Ginan. 12 different languages. Can you imagine how many different words they would have used? Gee. Thank you. But regardless of what word they have used, we must remember that one single word, prem, covers all. Gee. सर याली मदद, जी आली मदद। जैसे अभी आप बोले ना कि इबादत से ही नूर अपने अंदर प्रकाश आता है और वो लव आता है, लेकिन कलाम मौला में जैसा है कि रब, इल्म से तो रब पहचानो, तो कभी कभी ना ये दोनों के बीच में कनेक्शन थोड़ा समझा सर। ओके, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। देखें, इल्म वाली रूह दर्जा ब दर्जा ऊपर जाती है। इसका मतलब ये है, पहले इल्म और इबादत का मतलब समझो, इसके बाद इबादत करो। देखा आपने कितना सिंपल था? Wasn't that very simple? Learn and understand the meaning of the ibadat, how to do ibadat, and then perform ibadat. It's very simple. इल्म वाली रूह दर्जा ब दर्जा ऊपर जाती है। याली मदद, सर यानी मतलब कितने साल से ये समझने की कोशिश, सर हम कब बनेंगे? मौला ने एक बहुत ही अच्छा फरमान मेरे को जो बहुत ही पसंद था, जब मैं बहुत ही छोटा सा यंग था, हमारे बहुत ही बुजुर्ग उस्ताद हुआ करते थे, और हमारे जमाने के आरिफ कामिल की मैं क्या बात करूं और इसकी इल्म की क्या मैं आपको बात करूं, तो मौला का ये फरमान मैं हमेशा अप्लाई करता हूं कि कौन इल्म सिखा सकता है, दे सकता है, और ये मेरा इशारा मेरे उस्तादों की तरफ है, जमाने के आरिफों की तरफ है। मौला ने फरमाया, वो जो इल्म में मजबूत हो, दूसरा इबादत की सूझबूझ रखता हो। तो हमारे ऐसे बुजुर्ग उस्ताद थे कि जो ये दोनों चीजों में मजबूत हुआ करते थे, तब जाके ये इल्म आया आगे, वरना नहीं आ सकता था। तो चूंकि हम कभी कभार ऐसे लोगों से इल्म सीखते हैं कि जो हो सकता है इल्म में मजबूत हो, लेकिन रूहानियत में मजबूत नहीं होते हैं वो, और इसके लिए दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि इल्म किससे लेना चाहिए, कौन माहिर है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभार तो हम इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हैं इल्म के लिए,
یہ اچھی بات نہیں ہے. امام کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ علم میں بھی مضبوط ہو اور روحانیت کی سوچ بوجھ بھی رکھتا ہو. یہ امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے. آپ نے ضرور پڑھا ہوگا, نیا فرمان نہیں ہے. جی, وہ somebody else trying to ask something? یا علی مدد سر. یا علی مدد. تو ابھی ہم جیسے ذکر کر رہے تھے کہ علم اور عبادت, تو پھر پیروں نے بتایا, پیر شمس نے, کہ عشق عقل بھلایا. تو عشق کون سے درجے پہ آئے گا پھر؟ جب وہ آپ کو دیدار حاصل ہوگا نا, تو ہاں آپ کا ساری عقل جو ہے نا ڈنگ رہ جائیں گی. یہ تو آپ گنان کو سمجھنا اتنا مشکل ہے کہ کبھی کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ گنان کون سے لیول سے فرمائے جا رہے ہیں. وہ صحیح بات فرماتے ہے. ہیں کہ دیکھو, پہلے میں نے علم سیکھا, امام سے علم لیا, پھر میں نے عبادت کی, لیکن جب میں نے نور کو دیکھا نا تو میری عقل ڈنگ رہ گئی. پتہ ہے کیوں؟ کہ جو بھی اس نے سوچا تھا نا, اس سے وہ بڑھ کے نکلا. میں آپ کو ایک بہت اچھی اگزامپل دیتا ہوں اس کے لیے. دیکھو گنان کو سمجھنا کتنا مشکل ہے. And if anyone needs me to explain this in English, please let me know, because this is a very beautiful point. چارے چارے جگما فری فری جویو تیرے تولے کوئی نہ آوے. You know what? دوست جو یہ گنان جو ہے نا, اس کو بہت ہی کم لوگ سمجھے ہیں. بہت ہی کم لوگ اس گنان کو سمجھے ہیں. یہ چیلنج ہے. بہت ہی کم لوگ اس گنان کو سمجھے ہیں. لوگ پتہ ہے کہ کل جگ اور یہ جگ اور وہ جگ کی بات کرتے ہیں. نہیں, اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. آپ نے جو بھی گنان پہ توجہ دلائی نا, کہ اس کو دیکھ کر اس کا وہ تو اس کا عشق جو ہے عقل بلا دیا. یہاں پر یہ بات ہے اس گنان میں بھی. وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے کو تیرے بارے میں پتا چلا, یعنی کہ مولا کے نور کے بارے میں پتا چلا, دیکھو کتنی اوپر کی بات ہے, تو میں نکلا کمپیئر کرنے کے لیے, اس کا معاوضہ کرنے کے لیے میں نکلا. پہلے میں نے دنیا کا چکر کاٹا, دنیا میں انسانوں کے اندر دیکھا, عالم ناسوس میں دیکھا کہ میرے مولا جیسا کوئی ہے, میرے کو نہیں ملا. چارے چارے چک فری فری جویو تیرے تیرے کوئی نہ آوے. عالم انسانیت میں نہیں ملا میرے کو, عالم ناسوس میں نہیں ملا, تو میں عالم ملکوت میں گیا, پھر میں فرشتوں کی دنیا میں گیا. کون ایسا بول سکتا ہے جو all the way اوپر سے آیا ہو, تو وہی بول سکتا ہے. میرے جیسا قریب سے نہیں بول سکتا ہے یہ بات. پھر میں فرشتوں کی دنیا میں گیا, وہاں ڈھونڈا کہ میرے مولا کے تولے کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, نہیں ملا مجھے. وہاں پر بھی میرے مولا جیسا میرے کو نہیں ملا. پھر میں گیا عالم جبروت میں. عالم جبروت چار مقرب فرشتوں کی دنیا, اسرافیل, اسرائیل, میکائیل اور جبرائیل کی دنیا میں گیا میں. پتہ ہے کیا, وہاں بھی میرے مولا جیسے مجھے کوئی نہیں ملا. عالم جبروت تک کیا پیر, اور اس کو امام کے برابر نہیں ملا کوئی بھی. میرے مولا جیسا کوئی نہیں ہے, اس کے تولے کوئی نہیں آوے. پھر وہ فرماتے ہیں اپنے گنان میں عالم لاہوت میں گیا. عالم لاہوت میں, ونس میں, خدا کے دربار میں جا کر دیکھا میں نے. پتہ ہے کیا, میرے مولا جیسا وہاں بھی مجھے کوئی نہیں ملا. اب آپ وچاریں کہ کتنا اوپر کا گنان ہے, اور کون اسماعیلی ہے جو اس گنان کو سمجھ سکے. کون بولتا ہے کہ میں عالم لاہوت میں کیا, مجھے میرے مولا جیسا کوئی نہیں ملا. تو میں نے پوچھا, عالم لاہوت کو تیرے میرے مولا جیسا کوئی نہیں ملا؟ بولا نہیں ملا. بھائی کیوں نہیں ملا, وہ تو عالم لاہوت تھا. بولا میرا مولا جسم بھی رکھتا ہے,
जबान भी रखता है, दिखता मेरे जैसे है, लेकिन नूर के मकाम पर सबसे ऊपर है, क्योंकि वहां पर नूर तो था, जिस्म नहीं था। वहां पर नूर तो था, यकताई तो थी, मेरे मौला जैसी जबान नहीं थी। इसलिए मैंने कहा कि वहां पर भी मेरे मौला जैसा मुझे कोई नहीं मिला, कि यहाँ पर रह के इंसान, यहाँ पर रह के मेरे जैसा कमजोर इंसान, यहाँ पर रह के मेरी जबान बोलने वाला, लेकिन नूर उस मकाम का रखने वाला, उसके तोले कोई भी ना आवे। देखें, ये है गिनान। कहाँ समझेंगे हम इस गिनानों को? कौन समझाएगा हमको इस गिनानों को? जी वेल डन, वेल डन, बहुत खूब। इसी इसकी टेप मुझे सुनना पड़ेगा वापस। अजीज सर, इसी से रिलेटेड फरमान है सुल्तान मोहम्मद शाह का, खुदाने मरવું ઇબાદત ઉપર છે, ઇબાદત ઈમાન ઉપર છે, વળી ઈમાન હાસિલ થવું તે ઇશ્ક ઉપર છે, અને सुभान ઇશ્ક अल्लाह। કેવો હોવો જોઈએ। हाँ, तो अब सोचे कि ये फरमान कहाँ से शुरू हुआ? नीचे से शुरू हुआ। सही है, इश्क बुलायो ऊपर की बात थी, सही है, यहाँ से नीचे से। पहले आप अपने मजहब के लिए इश्क रखें, फिर अपने ईमान, अपनी रूह का इश्क रखें। जो अपनी रूह को नहीं चाहता वो कभी भी नहीं करता कुछ भी, राइट? फिर इमाम के ऊपर इश्क रखें। जो इमाम को डरता है अली अल्लाह कहते हुए, वो कहाँ इमाम से इश्क कर सकेगा? डरते डरते कोई इश्क नहीं कर सकता है। वो सही तो बात, बोलता है, सीधा सीधा कुल्लम कुल्ला बोलता है कि मेरा मौला अली अल्लाह है। फिर जाकर वो इबादत करता है, फिर जाके वो उस नूर को पाता है, और जब उस नूर को वो देखता है तो वो दंग रह जाता है। क्यों? कि जो भी उसने सोचा था ना, वो उससे ऊपर निकला, वो उससे भी ऊपर निकला, उससे भी ज्यादा निकला। देखा आपने, इश्क के दर्जात, इल्म के दर्जात, इबादत के दर्जात, प्रैक्टिस के दर्जात हैं। So Shanaz is asking me to explain this in English. So we covered 2 points in Urdu with Farida and Shanaz. So first point was that there is one Ginan of Pir Shams, the love ishq akal bulaya. In the love, I forgot my intellect. I forgot everything I had learned. So I was explaining that Ginan and that love is at the end point, not at the beginning point. Then there is a Farman, the one that says that you must have the love so you may perform, your iman may be solid, and when your iman is solid, you will perform the ibadat and you will get to the nur. So in the Farman, the stages of the love from the beginning, for your religion, for your tariqah, for your soul, for your faith, for your iman and the imam, and then you perform the ibadat so you may get to the ultimate nur. So 2 levels of ishq, one at the end, one at the beginning, and then there are stages of ishq. Second, I was explaining to my sister that the understanding of Ginan are so hard, but shukr alhamdulillah that we had a great teachers. According to Imam's Farman, not only they had the complete understanding of our tariqah, but they were also had the marifat of the batin. So they were able to explain to us what are the meaning of the Ginan. Then I was challenging all who are listening and all of those who normally are expert in the Ginan. And that is my challenge. That most of the Ismailis and most of those who read
and say that we understand Gnan? My challenge is, no, we do not understand Gnan. And I say we, that include myself, this Garib and Najis. We do not understand Gnan. And I was giving an example of that. That when Peer says, Chare chare jugma fari fari joyu tere tole koi na aave. When Peer said that I looked into the all four places and I was not able to find anyone compared to you, oh my Mola. People talk about the jugs, Kal Jug and Ye Jug and Wo Jug. No, 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 no. That is not what Peer was saying. Peer said, when I found that ultimate Nur, I wanted to see, is there anyone like my Mola in the Alame Nasud, in the world of humanity? So I went around the world and I looked at every single human and I could not find anyone like my Mola. So now, and the reason I'm saying that I challenge this, because if you think of the four jug, in the four jug, you will find nothing but the human. But he did not stop at the humanity. He said, then I went into the second stage, and that is the world of angels. I went into the world of angels, and I could not find anyone compared to my Mola. And then I went into the world of Jabrut, the world of the four angels, the Israfil, Israel, Mikael, and Jibrail. Even there, I could not find anyone comparable, equal to my Imam. You see, who can tell us this? Peer, they had gone all the way to the top. And from there, they are bringing us the news. See, we are not able to understand the Gnan because we never had teachers like the teachers that we were fortunate that we had. The Arifin, and especially Arif of our time, the one not only had the complete Nur according to Imam's Farman, complete Ilm according to the Imam's Farman. Then they are able to tell us. Then you know what Peer did? Peer said, even I could not find that in the Alame Jabrut, in the world of four archangels. So I went into Alame Lahut. So I went into the world of oneness. And to my surprise, I could not even find anyone equivalent to my Mola. Even in the world of oneness, I could not find anyone equal to my Imam. So I asked the question. I said, what do you mean? You did not find anyone equal to Mola in the Alam al-Lahut. And you know how he replied? That my Mola, he looks like me, a human. He has a tongue and the language that he speaks that I understand. And he has the Nur Ilahi, the Nur of the Azal and the Abad, Akhir and the Awal, the Zahir and the Batin. And I only found that in Imam Zaman, in a human body. Because Alam al-Lahut had the Nur, but did not have this Jism. Alam al-Lahut had the Nur, but did not have the language, nor the tongue, nor the body. My Mola is perfect. No comparison. Because he has everything. The body, the tongue, the language, the Farman, the Nur.
तेरे तोले कोई ना आवे मेरे मौला. See, that is Gnan. That's how we have to understand this Gnan. So we can enlighten our heart and our soul with this ilm, and then with the love, the ish of the Imam, knowing this, when we sit in ibadat, the love will come handy. This ilm will come handy. Inshallah, one day, just like Pir, we will be able to see what he saw in the Alam Nasut, Alam Mulkut, Alam Jabrut, and Alam Lahut, inshallah, one day. याली मदद सर, आपने लास्ट जी. टाइम समझाया था ना इसी पे, एक फिकर मुनिवर अमने छे तमारी के मानस रूपे साहेब जानजो जी. शुक्र मोला. थैंक यू अजीज सर. Shukran, Alhamdulillah. All right, let's make one last comment or last comment question, then we will stop here. يا المدد. Ya Ali Madad. always محترم صاحب, یہ جو لف کا بات آتا ہے تو بار بار ہمارے بزرگ جماعت یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مولا سے پیار اور عبادت بندگی علم یہ تین چیز, اور سب سے جو بنیادی بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم تھرو مہاجرت اور مصیبت تکلیف خود جماعت کی دیکھا ہے, اتنا بے پرواہی, جب آپ کو یہ لیول کا محبت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو میرے کو 100% نہیں 1,000,000% ڈاؤٹ ہے کہ کسی کو امام کے لو اور محبت میں اور علم میں اور وزڈم میں اس کا کوئی آت ہو, یہ امپاسبل ہے. اگر یہ پاسبل ہوتا ہے تو میں آخرت میں دعویٰ کروں گا اور دنیا میں بھی دعویٰ کروں گا. یہ سب سے پہلے آپ خود کو سمجھے کہ تم محبت کے لائق ہے نہیں ہے, آپ اس سے محبت کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے. یہ چیزوں پورا ہوتا ہے, یہ آپ کے جسم کے وہ جو کیمیکل کمی کا جب پورا نہیں ہوا تو آگے آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہ میرے عاجزانہ ایک عرض تھا. Shukriya, bahut nawazish. Thank you. So, my friend, I will summarize what you just said. The love for the humanity is the love for the Imam. The love for the soul is the love for the Noor. Inshallah, Imam's Farman, our peers and dais ilm and the Ginan will guide us on Sirat al-Mustaqim. May Mola bless all of us and give us tawfiq, ta'id, himmat wa yari to understand and the follow on the right path. Inshallah ta'ala. Thank you everyone. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Thank you everyone. Thank you, sir. Yali Madad. All right. याली मदद. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, Yani Madad, thank you so much. Ya Ali Madad, Ya Ali Thank Madad, you. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, Thank you, Yali Madad. Ya Ali Madad, Ya Ali Yali Madad. Madad, مولا تمہاری سوا قبول کرے. Ameen, Ameen, Ameen. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. ریئلی آج بہت مزہ آ گئی, ریئلی بہت خوشی Shukran ہوئی. Mola, shukran. یعنی مدد سر. Shukran Mola. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, Yali Madad. Ya Ali Madad, याली मदद. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, याली मदद सर. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. बहुत अच्छा सेक्शन था, बहुत मजा आया, खास करके जब आपने ये गिनान इंक्लूड किए थे तो और भी ज्यादा क्लियरिफिकेशन हो गया. Shukran और Mola, Shukran Mola. फरामीज जो है रूहानी राज में वो भी इसी से रिलेटेड थे, तो जबरदस्त लग रहा था कि जब वो पढ़े थे तो बहुत मजा आ गया. Shukran Mola, ہاں Shukran سر, Mola. اور آج ہندی میں سمجھایا نا اردو میں تو بہت اچھا. آپ ہمیشہ کبھی بھی میں بھول جاؤں تو آپ ضرور پنگ کریں مجھے, ضرور مجھے ہاتھ اوپر کر کے بولیں اردو میں بھی سمجھاؤ. میں پوری کوشش کروں گا اردو میں, بلکہ گجراتی میں بھی ضرور پڑھیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. جسٹ ریمائنڈ می.